My name is Hafi Paramu. I am a proud student of Foundational School. आज इस स्कूल में हम आए हैं, इसका नाम है फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल। कश्मीर का एक वाहिद ऐसा स्कूल है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां कैम्ब्रिज करिकुलम के तहत बच्चों को तालीम दी जाती है। हाल ही में जो इसी करिकुलम के तहत रिजल्ट्स बाहर आए, उनमें यहाँ स्कूल के बच्चों ने, बिलखुसूस 10th ग्रेड के बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अच्छे नंबरात से इम्तहान पास कर लिया। बहुत अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं होता, इस स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं होता, हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट नहीं होता, बल्कि ये वर्ल्ड ओवर जो बच्चे हैं जो इसी करिकुलम के तहत पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ इनका कंपटीशन होता है। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे। One of the biggest challenges I faced was back in my younger years, so grade 9, 10 and all that. I wasn't that good enough in studies, but eventually, I don't know why it was the case, but eventually what happened was that I practiced a lot, and because of that, it helped me develop my academic persona at a much higher level. We had 8 subjects in total, English, maths, sciences, etc. And I had 6 A stars and 2 A's, A stars being the highest grade. That's approximately 90 or 90 above. They say that students are basically the torch bearers of our society, of our future. What do you want to do in future? What do you want to become? How would you like to serve your society in future? In the future, inshallah, that only Allah knows where we'll end up. Indeed, I have set... What are your plans? For now, my plans are to do something in the field of mathematics, but where I'll end up, God knows best. Indeed. And one thing that we all have to keep in mind is no matter what we do and where we end up, we have to come back to society, obviously. And I hope whatever skills that I do achieve, whatever I have gained from Cambridge itself, from this curriculum, I'll put it back into my society. IGCSE basically means International General Certificate of Secondary Education. So our school, it follows the Cambridge curriculum, which is the Cambridge International Assessment. And our teachers are trained that way to provide those methods and to teach us that way and this whole curriculum. And then we took the IGCSE examination, which follows the Cambridge curriculum. पिछले साल जब बच्चों ने इस करिकुलम के तहत इम्तहान में वो अपेयर हुए तो उन्होंने तब भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस बार जब वो अपेयर हुए तो बराबर 100% उन्होंने वो मार्क टच किया। यहाँ के बच्चे इस काबिल हैं कि वो बड़े ख्वाब रख सकें, क्योंकि उनके जहनों में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का नाम जहन में कायम है और इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है सोच तो मौजूद होती है और वो जो ख्याल है उनमें इम्पार्ट किया है यहाँ के टीचर्स ने। यानी इस तरह से फाउंडेशन पर काम किया जाता है कि बच्चे बड़े ख्वाब देख सकें और उन्हें पूरा करने के लिए ये पुरअज़्म रहें, और वो भी इस छोटी एज में ही। We align with NEP 2020. So Cambridge curriculum, 80% is aligned with NEP 2020 in terms of the curriculum and the syllabus. And our Cambridge learners, after the A levels, they are eligible for appearing in NEET and JEE examination as per the directives from the Government of India, Ministry of HRD. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बड़ी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, यानी वो जानते हैं कि इस करिकुलम के तहत या जो एफिलिएटेड है इसके साथ वहाँ बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचर्स कितनी काबिल हैं, उन्हें किस तरह से ट्रेन किया जाता है, तो वो इसके बारे में पहले ही जानते हैं, तो बड़ा ही आसान रास्ता रहता है कि फिर वो बड़ा कुछ अचीव करे आगे ज़िंदगी में। For the people over there, they want to know that how Cambridge curriculum is different than the NCERT or something like that. Cambridge offers our children a pass, not only to the universities in India, but also abroad. Okay. So the students can face the local NEET examinations, and also at the same time, we're equipping them in such a way that they can
easily get admissions in the outside the universities, the top universities. How do you train your teachers to meet that level, to fulfill those expectations? We then first introduce them to the introduction, then enrichment. Every year we put them onto a different Cambridge certified training courses. I'll do something in those fields. I'll opt for med as well as AI because Cambridge, it helps us with several different opportunities. It keeps all the options open. So in future, right now I don't have computer science as my subject, as my course, but later on I can opt for it. I have taken up non-medical and economics already, so I have a lot of options open, a lot of streams open. So my main focus will be physics, the field of non-medical, and I might go into architecture, I might go into law. So I have streams, I have many options. And Cambridge, what it does, it actually opens up the biggest universities in the world. अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुआइब वानी के साथ मैं इकरा खून कश्मीर लाइव के लिए।